So I'll be talking to you guys also, Adina and Falak, first of all, you guys. So what we have done in this class till now is that chapter number 1 is completed in this batch. Thus, some basic concepts, some basic concepts. This is completed in this batch. So what will happen with you guys is that you guys are going to get extra classes for this some basic concepts. So this chapter will be completed not in this batch for you guys, but separately in the backup classes and extra classes. That is fine with you guys. Alina and Palak, yes or no, please tell me. Okay, you will have Hana bowling, Alina and Palak. Yes. Yes, na? In extra classes. The chapter number 2 that we are going to start today, that is atomic structure. Now, atomic structure, it is divided into 2 sections. Like I have divided into 2 sections. If you look at the NCERT textbook also, then also you will get an idea that there are 2 sections in atomic structure, and both of these are not related to each other. The first sections it deals with the discovery of electron, proton, neutron, with that. Okay, Shayama. Electron, proton, neutron, and stuff like that. Okay. The other part of atomic structure is quantum numbers. Now, the important part to understand in this 2 distinct section is that these 2 are not related to each other. So you can start with discovery of electron, proton, neutron, and then you can go to quantum numbers. You can start with quantum numbers, then you can also discuss discovery of electron, protons, and neutrons, and so on. These things. What I have seen with my experience is that discovery of electron, proton, neutrons, it seems a bit tough for the student. Those who have done this in the school, they would also understand that. I mean, there are many formulas, there are many new things to understand here. So this is generally tough. And then the quantum numbers is the easy part. But if I talk about the importance, yes, okay, fine, Zainab, not a problem. Okay, but if I talk about the importance of these 2 sections, then this discovery of electron, proton, and neutron, this is important till 11th standard. Until till 11th standard, this discovery of electron, proton, neutrons, and you will have photoelectric effect, Heisenberg uncertainty principle. All of these things are important till 11th standard, and if you want to give any competitive examination. But this quantum number part, it is important till your 12th standard. You need a good grasp on the quantum numbers part from this chapter. Discovery of electron, proton, and neutrons. If you have understanding, if you're able to solve the numericals, that you will be able to do it. Okay. But quantum numbers, you should have a conceptual understanding about the quantum numbers. Okay. So what I generally kya hota tha initially, when I used to teach, I used to take the discovery of electron, protons initially. Then I used to move to quantum numbers. But the discovery of electron, protons, neutrons, and that topic, the first topic, it is so intense and it is so numerical based and it is so extensive that the students, they generally get bored when they come to quantum numbers. Abhi tak chapter khatam nahi ho raha hai. The feeling is like that because this is completely hard. I mean, if you start with the numericals they are having a lot of calculations, so it takes a lot of time also. Because you will be spending a lot of time in this particular chapter, but majority of the time will be taken by this particular portion. So then I started doing quantum numbers first to get the easy part done quickly. And once you're done with quantum numbers, now what will happen is that initially whenever a new chapter starts or whenever a new class starts or whenever half yearly is done, whenever unit test is done, the next day you are very energetic. You're like, okay, fine, इस बार तो अच्छी marks आएंगे. इस बार तो मतलब फिर सब कुछ नया से start होता है, right? So when you are in a new chapters, you have certain amount of that type of energy, and then you are able to grasp quantum numbers conceptually very easily. Students, they do that. And then we are going to move to discovery of electron, proton, and neutron. Then the platform will be set, and we'll be starting to do the numericals. Okay. So discovery of electron, proton, neutrons, that I will be taking later on. I understand that many of the schools, they will be having examinations and tests. Like for example, Shaima C is having tests, and in her case, they are not asking quantum numbers in the test. They are asking only discovery of electron for the unit that they are going to do. So we have to just compensate in this case. Quantum numbers, you need conceptual understanding, so that's why you will have to do it first.
ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर हम क्वांटम नंबर्स बाद में कर लेंगे, तो क्वांटम नंबर्स बाद में करेंगे तो your brain will not be as receptible as it is right now when in the starting of chapter। ठीक है, ये थोड़ा तो आप लोग को महसूस होता होगा, चैप्टर के एंड आते आते थक जाता है बंदा। जब आप लोग का लाइट चैप्टर चल रहा होगा क्लास 10th में, द लाइट चैप्टर इज सो ह्यूज कि लेंस आते आते, पावर आते आते, देन अगेन उसके बाद इफ यू हैव करेक्शन ऑफ आइस, वहां तक थक जाता है बंदा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो व्हेन यू हैव कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, वो बहुत आसानी से मजे से करते हैं आप लोग। जब एंड तक आते हैं तो बच्चा थक जाता है, एक ही चैप्टर कितना देर तक। ठीक है, दैट इज व्हाई आई नीड the attention completely on quantum numbers, because discovery of electron proton में तो आपको हाथ चलाना पड़ेगा, in the sense that you have to solve the numericals। quantum numbers में you need your brain to be active। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll be starting with quantum numbers। ठीक है, अब now I am going to, ये तो सबके लिए था that we are going to start quantum numbers। Now specifically for the students who were already present, for example Shaima, Sabiha, Zainab, and yeah, I guess Jasleen। ठीक है, so the students who were with us in the last class, I did stoichiometric calculation. And you must have got a link of a video that I asked, and the Learnivio must have told you guys to watch the video and make the notes. Did you get any video link like that, Shaima? Tell me. Sir, I didn't get. You did not send? Okay, Zainab has not got it. Ashid, what about you? No, sir. No? Just give me a second. No, we have completed the portion of the first chapter, जो आपका क्या है, that is complete, पूरा खत्म हो चुका है, stoichiometry वगैरह सब कुछ हो चुका है। The only part that I was taking in that lecture was a bit two more numericals and then the law of chemical combination। ठीक है, तो उसके लिए आपको basically notes बनाने पड़ेंगे, and if they would have sent, then you must have had some doubts, and then I would have solved those doubts। बट आई गेस आपको भेजा नहीं गया, आई कैन नॉट सॉल्व दोस डाउट, बट उसको ठीक, जब भी आपको मिलेगा ना, देन यू विल वॉच इट, एंड द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द डाउट्स इफ यू आर गोइंग टू हैव एनी। बट इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन, और उसमें बेसिकली लॉज एंड, वहां पे क्या है, सिर्फ लॉज ही है, तो आप खुद से कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सो आई थिंक यू विल गेट द लिंक टुडे, and in the next class na, the first half I will ask the Learnivio team to send it to all of you guys। Okay, it will be shared with you today. In the next class, we are going to discuss the doubts that we are going to have from law of chemical combination. Okay. So today we are going to start with atomic structure, and Sir Satya is giving the next. Yes, Satya, for sure I will remember. Okay, Satya, I will make dua for you. May Allah make it easy for everyone who is giving need, है ना? So we have yes, चलिए तो आप कॉपी डालिएगा। चलो, राइट द टॉपिक। टॉपिक तो नहीं, सबसे पहले चैप्टर्स नहीं लिखिए। सॉरी सर, we started chapter 12। अच्छा फलक, can you please turn your mic on? Yes, Falak, can you please turn your mic on? Yes, sir. So what you're saying is that they have not done the some basic concepts. They have not done atomic structure. Yes, sir. They have done the two Only chapters from organic. basic. They have done organic chemistry first, the two chapters. Yes, sir. Okay. How did they do that? Did you understand anything from the school then? A little bit. A little bit. So hybridization must be a word that you may have came about, right? Hybridization. Then they would have taught you about sigma bond and pi bond, right?
So what did they teach you about hybridization? Hybridization is in chemical bonding. Okay. So like what we will do now, you stay with us for this class, and then we are going to figure out something for you regarding hydrocarbons and some basic techniques वगैरह. ठीक है? Okay, Okay. sir. Thank you. ठीक है, इस अभी ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं. अच्छा, anyone else who are in anyone else school they have started with organic chemistry first, please let me know so that आपकी और फ्लक के साथ में क्लास लगा दी जाए. ठीक है. वन थिंग नो जैनब नो. ठीक है. इफ किसी के स्कूल में अगर स्टार्ट हुआ हो ना, somebody have started organic chemistry, then please let me know. Please let me know on WhatsApp itself. Okay, sir, today we were taught organic chemistry, like that you are going to message me. So as I have already told you guys, like the structure of atom or atomic structure, the chapter, it is divided into two portions. तो उसको हम और नहीं डिटेल में बताएंगे. You can write the chapter name, structure of atom. Sir, your screen And is structure of atom, we are going to start with. Sir, your screen is lagging. What, Sabiha? My screen is? Lagging, sir. My screen is lagging. Is it Yes. lagging a lot? Like it gets stuck in between. Okay, just give me a second. It is such a irony, you know, guys. Like last year, I was in a 4G connection. Everyone, like till last year, the last academic session, February, March, I was using 4G connection and it was completely fine. This year, I have got 5G connection and it is worse than 4G. How's it now? Is my voice still lagging? No, sir. So, Hello. Hey guys, am I still lagging? No, sir. so Okay, and hopefully I'm audible. I'm going to read a few lines from a textbook. Just let me know if I'm audible correctly. We have seen that alkyl halides undergo substitution and elimination reactions. When other atom replaces the halide ion, the reaction is a substitution where an halide ion leaves with another atom. The reaction is elimination reaction. Was it crystal clear? Sir, it was Yes, all sir. right, but like in the middle, it lagged a bit. That's it. Okay, there was a slight lag, but it was understandable, right? Yes, sir. ठीक है, चलो. So let's move on. Let's move on to the topic that is, please write this with me. Okay. The chapter's name is Structure of Atom. Then you are going to write quantum numbers. Quantum numbers. Quantum number is the most important, one of the most important topics that we are going to learn in 11th standard. And this topic is also new for you guys. Now, whenever I say quantum numbers, this is one phrase that should pop in your head. As soon as I see quantum numbers, what should pop in your head is address of electron. Address of electron. Okay. Now this is what should pop in your head. But when they ask what is quantum numbers, then you are going to write a statement, and this should be written
whenever you have a test, the set of, please write this with me, the set of 4 quantum numbers which gives the status of electron and its shape, size and orientation of orbital size of electron के बाद 1 second. You just need to write and give its नहीं करना, its के जगह ना gives कर दीजिए. You have to make a correction. Gives shape, size and orientation of orbital in which the electron is present. ये ऑर्बिटल क्या बोला है वो आएगी चीजें बाद में, ठीक है ना. बट right now what you need to understand from quantum numbers are address of electron. Whenever I say quantum number, it should be what in your head, it should be address of electron. Now, as we have said, there are what 4 quantum numbers, a set of 4 quantum numbers. So you will write next point, there are 4 quantum numbers. There are 4 quantum numbers. The first quantum number is known as principal quantum number. Principal quantum number. Why did I just give me a second? Muniba, is this your first class, Muniba? ये हम भूल गए. No, sir. नहीं ना. आप किनके साथ आते थे? आप you were with Zainab Shaima और Jobita Hashid. I think you were with Jobita and Hashid, ना? Yes, sir. Right. So आपकी जो क्लासेस लग रही थी ना मोल कंसेप्ट की, वो लगती रहेंगी, ठीक है. ये आप अलग से आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना है, राइट. आई होप दैट्स ओके, राइट. Fine. ठीक है. There are 4 quantum numbers. The first one is known as principal quantum number. We represent principal quantum number by the letter small n. I will be writing sometime PQN for this, ठीक है, in short. Secondly, please write these things with me. We have azimuthal quantum number, AZIMUTHAL quantum number. We represent this azimuthal quantum number by the letter small l. I will sometimes write AQN in short. AQN I am going to write. Right? L is the generally it is accepted as azimuthal quantum number. Then we have magnetic quantum number. A magnetic quantum number, it is written in textbook as M with a subscript of L, but I will be representing it as only M. Okay? When I will write M, generally if you write M, the teacher will also understand that it is magnetic quantum number, and sometimes in short I will write N through N. The fourth one is known as the spin quantum number. Spin quantum number, and in the NCERT textbook it is MS, but we are going to represent it as only small s. I will sometimes call it A as SQN. SQN. So there are 4 quantum numbers. I will just give you an idea about the address of electron and how this 4 quantum numbers it relates to the address of electron. Just let me know, is there anyone who is still writing? Fine. If no one is writing, so I can use space. ध्यान दीजिएगा guys. Please know what you should do. You should leave your pen aside and just look at the screen and try to understand what I'm saying. You don't need to write anything. Okay, you just need to focus what I'm trying to say. Whenever we ask for the address of a human, है ना, उनको वहां से relate करके चलेंगे. Like if we ask for the address of human being, then you will ask the address only if you know the city.
until unless you are in a city, you will not ask for the address. पहले तो आप उससे पहले तो शहर वगैरह पूछेंगे, so शहर के आने के बाद you will ask for the further address, right? So when you are in a city already, and let's suppose you are going to meet one of your friends, and then you ask that what is the address, so you will first of all go to their street. ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ पर जाना पड़ेगा, स्ट्रीट नंबर पूछेंगे आप, है ना, गली नंबर पूछेंगे, इंडिया में है तो मोहल्ला कौन सा आप ये पूछेंगे, है ना. And if you will ask what is the lane, अगर कहीं और है आप, तो basically you will ask what street do you live in. Once you are at the street, आपको उस टाइम भी पता नहीं चलेगा, है ना, कि उनका घर कौन सा है. Once you have got to the street, generally you are going to ask how does your building looks like, what is the color of your building. सही है ये सोना, please tell me. Yes, sir. ऐसा ही है, Yes. है ना, you will ask for color, but it will be very difficult to know the, it will be not useful to ask what is the color of building if you are in Riyadh, है ना. क्या ख्याल है, who lives in Riyadh? Sami. मुनीबा ना. जोबिता, you also live in Riyadh? हाशिद. तो रियाज में कलर पूछने का कुछ फायदा होगा? Will it be beneficial, like will it be useful? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा मुनीबा? No, sir. Almost the same color. Almost all the buildings are what Almost all of color? them. Color. Pink color. नहीं. Pink नहीं, brown. Yeah, mostly it is Brown. Brown है ना, some or other shade of brown. ठीक है, चलिए, but we are not, it's not that कि रियाज ही बस एक शहर है. Let's suppose we are in some different city, है ना. इंडिया में आ जाइए आप, इंडिया में आपको हर कलर मिलता है, राइट. In a single street you will find all the colors. लाइक आपको पिंक से लेके मैजेंटा से लेके पीला से लेके सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है. सो यू आर इन व्हाट, यू आर इन द स्ट्रीट, यू आर आस्किंग फॉर द color of the building. Once you have got the building, let's suppose that your friend, they live in a flat type of thing, flat type of arrangement. Once you are in the building, you will ask for what is the floor number or flat number, something like that. Now, once you have got to the floor, okay, once you have got to the floor, then you are going to just knock on their door maybe, and then you will either have your friend or you won't have your friend. मतलब वो कहीं बाहर गए होंगे, ऐसा नहीं कि you won't have your friend in that sense, in the sense कि वो कहीं बाहर गए होंगे या तो वो सो रहे होंगे, ठीक है ना. सो भी रहे हैं तो मतलब क्या मतलब, they are not present, right. सो रहा है कोई आदमी तो मतलब है, लेकिन माइंड के एतबार से तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है. So same thing happens with the electron also. I hope you can understand. In our human world, we have street. The electron will have a circular path that we call orbit. Maybe आपने पहली बार ऑर्बिट सुना होगा, बिकॉज शायद 9th की क्लास, 9th स्टैंडर्ड में या फिर 10th स्टैंडर्ड में जब आपको पढ़ना था तब आपके सिलेबस से ये डिलीट कर दिया गया हो. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड ऑर्बिट? Yes. Yes, sir. यू गाइस हैव हर्ड, है ना. तो जैसे स्ट्रीट हमारा वैसे ही है कुछ कुछ ऑर्बिट, यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes. करेक्ट है ना. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट ऑर्बिट, एंड principal quantum number is going to give an idea about orbit. We are going to define and everything. Please don't write this. ठीक है, सिर्फ सुनना है आपको. Now inside the orbit you will have certain subshells, what we call subshell or suborbit. जैसे ऑर्बिट को शेल कहते हैं, तो उसी क्या मिलेगा आपको, सब ऑर्बिट, और यू विल गेट सबशेल. अब बिल्कुल किसी एलियन को आप अगर समझाने के लिए पहुंचे कि लोग कहाँ रहते हैं, then you will say that we live in a street. Inside street there are many buildings. What are buildings? So you will say inside street there are certain portions that are always going to be smaller than the street. The buildings are going to be smaller than the street, and the buildings, all the buildings, they will lie inside a street only. So same here also, I'm explaining you, because आप तो alien है electronic world के लिए. So in an orbit there are suborbit, जैसे हमारे पास building. Now inside the subshells or suborbit, now please understand, each building will have different floors. Similarly, each suborbit will have different what we call as orbitals. And in the orbital, जैसे आप वो घर पहुंच गए उसके, in the orbital you will either find the electron in the what we call as upspin or what we call as the downspin. So the principal quantum number, the suborbit, it is going to be given by azimuthal quantum number. Then we will get the magnetic quantum number that is going to give you the idea about orbital, and then we are going to talk about the spin quantum number that is going to give you an idea about the upspin or downspin. So थोड़ा ओवरव्यू मिल गया आप लोग को that what we are going to do. Yes or no, please tell me.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. Now we have to understand what is orbit and everything. ठीक है. Now I'm going to write few things. Copy it down. You will understand everything. ठीक है ना. Whatever we have, I've just explained ना, उसी चीज को बस हम लिखने वाले हैं. ठीक है. Please write concept of orbit and shell. Whenever I'm explaining, तब आप कभी मत घबराइएगा कि सर दिखाएंगे नहीं, इस चीज को हम लिख लेते हैं. I will make sure that everything is present in your notes. So whenever you are rereading the notes, you will feel like you are sitting in a class. And whenever I am writing something और आपको ऐसा लग रहा है कि सर तो लिखा के निकल जाएंगे, सर समझाएंगे नहीं, I will explain that to you. ठीक है ना. So कभी ऐसे हड़बड़ाइएगा, आराम से बस सुकून से बैठिए, लिखिए. ठीक है. Concept of orbit and shell. You will write here the non-radiating circular path around nucleus in which the electron moves is called orbit या फिर shell. ठीक है ना. एक ही मतलब है दोनों का. These are just different words for the same thing. Orbits or shell. It is denoted by K, L, M, N, and so on. Also, it is also denoted by, है ना, ये मैथ वाला दो कॉमा, by 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है. तो K represents K shell, first cell L cell, इस डिनोशन है बस, nothing else. फर्स्ट सेल को K बोल दिया, सेकंड को L बोल दिया, and so on. अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सब ऑर्बिट और सबशेल. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, concept of suborbit, or we also call this subshell. I hope you have written the 3 points from the orbit and shells. अब please write here. जैसे कि बिल्डिंग होता है ना, उसी तरह का डेफिनेशन. Every orbit, yeah, sure, yeah. Every orbit consists of smaller regions called suborbit, or we also call it subshell. ठीक है. यहां तक लिखिए. Just as we cannot live anywhere in the street, you cannot live anywhere in the street, no? Similarly, the electron cannot be found anywhere in the orbit. There are certain subshells and suborbit where you are going to find the electrons. ठीक है. तो every orbit it consists लिख दिया हमने. Consist नहीं लिखेगा आप लोग, इसको स्पेलिंग सही कर लीजिए. Consists है ना, of smaller regions called suborbit or subshell. Is everyone done writing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. ठीक है. Now, what I need you to do now again is to leave the pen aside and ध्यान से समझिएगा इस चीज को. ठीक है ना. ध्यान से समझिएगा. सब ऑर्बिट किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे दुनिया में, लेकिन अब आवर वर्ल्ड, द सब ऑर्बिट इट रिप्रेजेंट्स व्हाट. क्या कहा था हमने? स्ट्रीट के बाद Building. बिल्डिंग. करेक्ट. बिल्डिंग. तो इन बिल्डिंग वी शुड नो द कलर ऑफ बिल्डिंग, राइट. हाउस, बिल्डिंग, जो भी. ठीक है, सही है. सो कलर ऑफ बिल्डिंग, बट इन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड द बिल्डिंग्स दे आर नॉट ऑफ डिफरेंट कलर, रादर दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. मान के चल सकते हैं ना. इतना तो चेंज होगा हमारे वर्ल्ड में और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में. सो एंड देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, है ना. देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिल्डिंग. आप समझ लीजिए नॉर्थ कोरिया में, जैसे नॉर्थ कोरिया में यू शुड हैव स्पेसिफिक हेयर कट, है ना. यू शुड हैव स्पेसिफिक दिस, स्पेसिफिक दैट, वैसे. सो आई विल राइट
हियर आप उसको सिर्फ समझिएगा अभी, डोंट राइट इट नाउ, आई विल गिव यू टाइम, ठीक है ना। नेम, शेप एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट इट कैन होल्ड, मैक्सिमम ऑर्बिटल बोल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझने वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। सुनिए आराम से। वी हैव द नेम दैट इज एस, एक सब ऑर्बिट, एक बिल्डिंग, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एस। उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है स्फेरिकल। कैसा शेप होता है उसका, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये तो सर्कल है, 3D में स्फेरिकल होगा, है ना। तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, ये स्फेरिकल हो जाए, ऐसे दिखा देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, चलिए स्फेयर है। तो व्हाट इज द शेप हियर, आई विल आल्सो राइट द नेम बिकॉज ये सर्कल लगने लगे आपको। सो द शेप इज स्फेरिकल, ठीक है। चलिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन होल्ड इज 2, आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा, ठीक है ना। आप खुद बता देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड कर सकते हैं। अगला जो है उसका नाम होता है पी, एंड इसका शेप जो है वो डंबल जैसा, डंबल, ठीक है। डंबल का शेप इस तरह से, ऐसे डंबल का शेप ऐसा होना चाहिए, बट द डंबल इट इज लाइक देयर विल बी 2 लोब्स यहाँ पे, है ना। जैसे ईयर लोब्स कैसा दिख रहा है, सो वी कॉल इट लोब्स, LOBES, ठीक है। तो अगर हम एस या फिर स्फेरिकल की बात करें, देन हियर वी हैड लोब, हाउ मेनी लोब वी हैड 1 लोब। If I talk about the P subshell, then number of lobe that we are having right now, it is equal to how much? We are having 2 lobes. ठीक है, 1 lobe में how many? 1 lobe छोड़ दीजिए, ठीक है ना। 1 lobe and यहाँ पे 2 lobes. The maximum number of electron that the S was having was 2. P में होते हैं 6 electron. Next we have the D. The shape of D subshell is double dumbbell. Double dumbbell. Generally हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, like we represent it like this. ठीक है, तो 1 2 एंड हियर हाउ मेनी लूप्स वी आर हैविंग, टेल मी गाइस, यहाँ कितने लूप हो गए, काउंट करके बताइए। 4. 4 loops, very good, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस इट इज 10 इलेक्ट्रॉन। अब इतने तक में ना आपका पैटर्न बन जाना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा, थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे तो बन ही जाएगा। द नेक्स्ट सबशेल इज कॉल्ड एफ। शेप इसका होता है, बट उसको आप लोग को पढ़ना नहीं है, इस वजह से एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इट इज व्हाट, कॉम्प्लिकेटेड। बट यू कैन टॉक अबाउट द नंबर ऑफ लूप्स। आप लूप्स बता सकते हैं कितना होगा, पैटर्न समझिए। मैथ्स में आपको एक सवाल आ गया, 1, 2, 4, गेस द नेक्स्ट नंबर, हाउ मेनी लूप्स, टेल मी। 6. 6, और कोई, 6 नहीं हो सकता ना, 1 2 में देखिए, 1 2 में 6 वाला पैटर्न आएगा जैनब, 1 2 में तो 6 वाला पैटर्न नहीं फिट होगा ना, व्हाट डू यू थिंक जैनब, Yes, sir. है ना। तो सोचिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, 1 से 2 जा रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, 2 से 4 जा रहे हैं तो व्हाट इज द सेम थिंग शुड हैपन, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे +2 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो +2 होना चाहिए, तो 3 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, या तो +1 हो रहा है, और व्हाट एल्स इज हैपनिंग, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 2, व्हाट एल्स इज हैपनिंग, Multiplied by 2. हाँ, into 2, and is the same thing happening here also? Yes. So same thing will happen here also, and you will get how many loops? You will get 8 loops. Make sense? बताएं, ठीक है। चलिए, अब उसी तरह से थोड़ा सा आप यहाँ भी बताइए, what is happening when you are going from 2 to 6? What is happening when you are going from 6 to 10? And similarly, you can tell me how many electrons will be there in the F subshell. 3. चैट में बता दीजिए, आई एम, बिकॉज हाँ सभी करेक्ट, वेरी गुड सभी, हाँ 14. चैट, हाँ ठीक है, ठीक, ओके ओके, 14 आई थिंक आंसर निकल रहा है सब बहुत लोगों का, ठीक है ना। यू कैन सी दैट two things are happening 2 to 6 में, either you are multiplying by 3 or you are adding 4. What is happening 6 to 10? We are again adding 4. So I think adding 4 is the pattern that we are having here, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब अगला क्या है, you will have G subshell, ठीक है।
क्या आपके पास जी सबशेल. ओके, नाउ द जी सबशेल इट इज अगेन एफ सबशेल. जब आपको नहीं पढ़ना तो जी सबशेल का भी शेप नहीं पढ़ना है, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड. And the number of loops this will be having, I hope you can answer that. It is going to be what? 16, है ना. और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स. इट शुड बी हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द जी सबशेल कैन होल्ड इज 18. ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा ना. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, हाँ वेरी गुड सर, यहाँ पे आप एस पी डी एफ जी शेप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा. डोंट ट्राई टू लुक एट द स्क्रीन एंड राइट. ठीक है, नाउ आई एम लीविंग द स्पेस. आप लोग लिखिए आराम से एंड रेज योर हैंड वंस यू आर डन. साथ साथ नहीं लिखिएगा. जब हम कहें ना साथ मत लिखिए, साथ मत लिखिए, गड़बड़ाना नहीं, आराम आराम से चीजें. अलीना एंड फलक समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes, sir. ठीक, आई अंडरस्टैंड कि नया है थोड़ा तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट एफर्ट लगाने से ही होगा. 10th क्लास में क्या होता है ना, 10th क्लास में आपको जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसमें बहुत कुछ नया नहीं रहता. फिजिक्स में मतलब रहता है नया, लेकिन बहुत ज्यादा नया नहीं रहता. हर स्टेप पे नया कंसेप्ट नहीं आने लगता है, राइट. बट 11th क्लास में उसके लिए आपको थोड़ा सा चौकना रहेगा. लेकिन इन एवरी स्टेप यू विल बी हैविंग सम न्यू कंसेप्ट्स. थोड़ा 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 डेली पढ़ते रहिए, आराम से हो जाएगा 11th में. बट ये है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा. थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़ो, खासतौर से इन सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. देखिए मैथ्स और फिजिक्स में क्या है ना, इन अ सेंस हार्ड तो है वो सब्जेक्ट्स, बट इफ यू हैव डन इफ यू हैव डन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स, तो वापस से उसको करने में आपने अगर एक हफ्ते का गैप भी रख दिया, देन आफ्टर अ वीक आल्सो यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस विद अ स्लाइट रिविजन. केमिस्ट्री और बायोलॉजी में व्हाट इज देयर ना, इन केमिस्ट्री स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव थ्योरी, थ्योरी ऐसे इवेपोरेट हो जाता है दिमाग से. सेम विद बायोलॉजी आल्सो. बायोलॉजी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तब आपको चीजें याद रहेंगी. अगर आपने एक हफ्ते का भी गैप कर दिया ना, तो लास्ट वीक क्या पढ़ा था भूल जाते हैं बच्चे, वो इवेपोरेट हो जाएगा. सो दी ओनली ऑफ पढ़ना तो है ही, उसमें सब्जेक्ट को गाली देके तो कुछ होगा नहीं ना. अब सब्जेक्ट में जितना बुरा भला कहेंगे, चेंज तो होने वाला नहीं. तो यू नीड टू व्हाट एक्सेप्ट इट, और फिर जिस सब्जेक्ट को जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ना. ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री डेली आप पढ़िए. केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोग को न्यूमेरिकल्स ज्यादा ज्यादा सॉल्व करने चाहिए, है ना. यस जोगिता, यू वांट टू से समथिंग? No, sir. नहीं. हाँ, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. Waiting for Alina, Falak, Arshid, Jasleen, and Sabiha. I think Sabiha तक ही. Alina and Sabiha waiting for you guys. Alina, are you done? Yes, sir. हाँ चल ठीक है. Sabiha, what about you? Are you done? आपने हाथ कैसे रेज करना था वो भूल गए क्या आप? Yes, Sabiha, are you done? Yes or no? Sabiha कुछ बोली नहीं. Sabiha, let me know if you are not done. ठीक है? I'm moving forward. Just let me know if you are not done. ठीक है. Sir, तो I'm done. I forgot how to hand raise.
अच्छा ठीक है, तो बोल दीजिए माय कॉन्टेक्ट है ना, एंड यू आर डन. बाय द वे, इफ यू आर यूजिंग अ विंडोज और लैपटॉप समथिंग लाइक दैट, देन ऑल्ट प्लस वाई से आपका हाथ रेस हो जाता है, ठीक है. एंड इफ यू आर यूजिंग मैक, देन आई मैक में पता नहीं ऑल्ट को ऑल्टरनेटिव जो भी होता है वो प्लस वाई दबाइएगा तो हो जाए. ठीक है, नाउ वी आर डन विद बिल्डिंग. अब हम लोग आ जाते हैं स्पिन, मतलब कहाँ पे, ऑर्बिटल पे आते हैं ना, फ्लोर नंबर पे आते हैं. सो राइट हियर कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है, यहाँ लिखिएगा. Every subshell is further composed of various smaller region called orbit. ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन है आपके समझने के लिए कि ऑर्बिटल कहाँ है. तो सबशेल के अंदर. Where is orbital? It is inside the subshell. Now, what you are going to write when they ask in the examination, this is talking about the location exactly. This is not exactly defining the orbital. When they ask you what is orbital, define orbital in the examination, you are going to write this particular statement. The region or space around nucleus where the probability of finding electron is maximum. है ना. इलेक्ट्रॉन कहते हो ऐसी कोई, मतलब स्कूल स्कूल तो जाना नहीं रहता उसको, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, घर पे ही रहेगा, है ना. अगर मान लीजिए कोई बच्चा इसको स्कूल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, घर पे ही रहेगा, दैट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. तो वहीं पे ऑर्बिटल पे, यानी कि उसके घर पे, अपार्टमेंट में जाके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल. आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन आल्सो. ठीक है, प्लीज साथ साथ लिखते रहिएगा. आई ऑल्सो say the word so that we don't have to look so many times in the screen. अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे. Now we have understood like what is the street, what is the building, and what is the apartment of an electron. Now we are going to come and we are going to talk about the quantum number side, है ना. तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डालिए हेडिंग. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अरे एक सेकंड अलीना, ये क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है ना, यू मतलब वो फिर गलती अपनी होती है आपसे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिप्रेजेंटेड बाय एन. इसको क्या बोलते हैं, पी क्यू एन, है ना. प्लीज राइट विथ मी, राइट दीज थिंग्स विथ मी. ओके, इट गिव्स द आइडिया अबाउट orbit in which the electron is present. Second point लिखिएगा. It gives the idea about average distance between nucleus and electron. तीसरा point लिखिएगा. It gives the idea about the energy of electron present in an orbit. ठीक है. What distance between, ठीक है, और लिख लीजिए. It gives the idea about size of orbit. सबसे पहले when we will understand कि ये ऑर्बिट बताता है कि in which orbit the electron is present.
So when we are saying that it is present in first orbit, that means it is nearer to the nucleus. Second orbit, it is a bit further away from the nucleus. Third orbit, it is more further away from the nucleus. So I hope you understand the second point. It will give you an idea about average distance between the nucleus and the electron. Another point is that we will talk about the actual distance of the orbit and the nucleus, the electron and the nucleus. Also, when we are going to learn about the formulas. Okay. Right now अभी आपको समझ में आ जाएगा कि it gives an idea about the distance. Exact distance भी calculate कर लेंगे हम लोग, but that will be later. Then the next point is that it gives the idea about energy of electron present in an orbit. ये कैसे होगा? Please understand. You know that there is a formula to calculate the potential energy of any object which is at h height. ठीक है ना? Which is at h height. ये height है ground से, तो यहाँ से you can calculate the potential energy. The potential energy is only because the Earth is attracting the object. अगर अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता then we would not have found the potential energy. Potential energy इसमें कुछ होता ही नहीं. Similarly, trying to understand, in the nucleus we have proton. फिर से हम कह रहे हैं ना, until unless there is attraction from the earth to the object, there will be no potential energy. We have attraction, that is why we have potential energy. Potential energy को हम energy बोल रहे हैं, ठीक है? Since we have attraction from the earth, there will be some energy associated with an object that is on h height, that is a bit away from the earth. Similarly, when you talk about nucleus and electron, the nucleus is having positive charge because of the presence of protons. The electrons will be having negative charge, and depending on the orbit, if it is in the first orbit, it will be nearer to nucleus. If it is in the second orbit, it will be further away from the nucleus. Depending on the distance between nucleus and the electron, it will have certain energy. ठीक है? उसके बाद it gives the idea about size of an orbit. So, the first orbit it will be smaller, second orbit will be bigger, third orbit will be even much bigger. All of you understood this 4 points? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. No doubts? No doubts ना? No. ठीक है. ये तो चीजें थी समझने की. अब कुछ चीज आप क्या करना पड़ेगा याद. ठीक है ना? What you need to remember is, please write this down. Values of principal quantum number. It is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Similarly, the PQN, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल, इसको रट लेना है, बिल्कुल रट लेना, ठीक है ना? जो हम बोलते हैं रट लेना, रट लेना. PQN can never be less than 1. ये 1 से कम हो ही नहीं सकता. The orbit number it is going to start, कहां से स्टार्ट करेगा? कौन सा ऑर्बिट भाई? एक और पहला, एक जीरो ऑर्बिट कुछ नहीं है. गॉट दिस? ठीक है. ये चीज आपको क्या कर लेनी, बिल्कुल रट लेनी. अच्छा, इसको हम थोड़े डिफरेंट कलर से हम लिखते हैं, आपको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा. इसको हम तरीका करते हैं, ग्रीन से कर देते, पिंक से कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग लिख रहे थे क्या? सेकेंड. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया. लिखते हैं सेकेंड, अजीमुथल क्वांटम नंबर. अलीना, लास्ट टाइम आप धनबाद कब आए थे? जब मैं 9th में थी. अरे बाप रे, बहुत टाइम हो गया तब तो. क्यों नहीं पसंद है धनबाद आपको? नहीं सर, 10th में नहीं आए थे. अच्छा, 10th था इस वजह से नहीं आए थे. धनबाद में, like धनबाद is special because there are some relatives, also because my grandfather used to study in ISM. You know ISM, Indian School of Mines? No sir. आपको ISM नहीं पता है? आप अपने फादर से पूछिएगा. Indian School of Mines. That was the, वो माइनिंग इंजीनियरिंग की एक ही स्कूल है, like इंडिया में स्पेसिफिकली फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग. You will ask your father, he will know about it. आपने धनबाद के बारे में तो पता रहना चाहिए, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है. नाउ इट हैज बीन मेड IIT आल्सो. चलिए, अजीमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है. नाउ अजीमुथल क्वांटम नंबर, अब उसके बारे में हम लोग लिखेंगे. इट गिव्स एन आइडिया अबाउट, it gives the idea about subshell in a given shell. Subshell in a given shell. आपको ये पता है कि आपके धनबाद में एक IIT है? हाँ ये मालूम. हाँ, वही IIT जो है ना, that was previously known as ISM. वही पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, the same institute. It gives the idea about subshell in a given shell. ठीक है. देखिएगा उसके बाद
for a given value of, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड पॉइंट हम लिख रहे हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पी क्यू एन, जो कि एन होगा, है ना, वी विल बी गिवन अ वैल्यू एन, कोई नंबर होगा, देन द वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number lies from 0, यानी कि द वैल्यू 0 टू n-1। ठीक है, तो l जो होता है, l की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0, 0 का मतलब क्या, द नंबर 0, है ना, द नंबर 0 टू n-1। ठीक है, सब चीजों के बारे में आपको समझ में धीरे धीरे आएगा, विथ हैरी रखिए, सिर्फ पेशेंस रखिए, 0 से n-1। ठीक है, 0 से n-1, ये अभी आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक, 0 से n-1 तक। नाउ we have learnt about the subshell, and when we learnt about the subshell they had some name S P D F, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलेगा उसको क्या मिलेगा, that will be a number. So what we need to do, we need to assign some code, है ना, कि 0 का मतलब क्या होगा, अगर 1 आ गया तो 1 का मतलब क्या होगा, अगर 2 आ गया तो 2 का मतलब क्या होगा, and so on. So I will write here the name, और यहाँ पे हम लिखेंगे AQN, यानी कि L की क्या वैल्यू है, when if you're having एस सबशेल, तो एस के लिए हमने कोड रखा है 0, हमने नहीं रखा, मतलब केमिस्ट्री ने रखा, ठीक है। सो एस मतलब, यानी कि इफ यू गेट द वैल्यू 0, दैट मींस व्हाट सबशेल यू आर इन द एस सबशेल। ठीक है, इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, आई थिंक इट विल बी बेटर, एस सबशेल, some more space, this would work, so S subshell. Now for P subshell, if I get the value of azimuthal quantum number as 1, that means for P subshell, अगर हमको 2 मिला तो इसका मतलब क्या होगा, that is D subshell. If I get the value as 3, it will be F subshell. And for G subshell, we have kept the value as 4. ठीक है, तो इसको लिख लीजिए सारा, you're still writing it, please complete this down. I'll wait for a few seconds, उसके बाद हम खुद से scroll down कर लेंगे, you're still writing, then you are going to let me know, है ना, कि सर अभी रुक जाइए, चलो अभी रुक जाइए। Next जब तक कंप्लीट कीजिए, okay, Sabiha, you are done. Sabiha and Alina, just let me know if you are still writing. Just let me know if you're still writing. Everyone is done. ठीक है, we'll write a point. Now, as soon as we got, if I get the value 0, तो हमको S पता चल जाएगा. As soon as we got to know that we are in the S subshell, I will also know the shape of the subshell, है ना. तो indirectly I can say that azimuthal quantum number also tells about the shape of subshell. Shape of subshell. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लगाते हैं मैग्नेटिक करना, मैग्नेटिक भी कर ले क्या, एक बार मैग्नेटिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक साथ आप लोग को बता दिया जाएगा सबको। ठीक है, चलिए, फिर इन थर्ड नंबर, थर्ड क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थोड़ा सा अलग है, तो उसमें अब ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर represented by m, we call it mqn. Is right here. It gives the idea of number of orbitals in a given subshell. Okay, I'm just pausing here a bit to explain you guys. In the previous cases, when we had the principal quantum number and the azimuthal quantum number, they were answering a what question. What orbit, what shell, what subshell, what subshell, what suborbit, है ना? कि कौन से शेल में, लाइक फर्स्ट शेल में या सेकंड शेल में, it is in the S subshell or the G subshell or the F subshell. But when you talk about magnetic quantum number, it is going to answer how many. Magnetic quantum number will tell you how many orbitals. बात समझ में आ गई सबको? yes or no, please tell me. ध्यान रहेगा, है ना? Now you will understand it much better. जी मुनीबा, मैं ask something? No, sir. नहीं ना? ठीक है. I hope it is clear. Then you will write next. For a given value of as we all know, orbitals जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सबशेल के अंदर. तो ऑर्बिटल की जो वैल्यू होगी that will depend on the subshell. ठीक है. So for a given value of azimuthal quantum number, यानी कि for a given value of subshell, the value of magnetic quantum number lie from minus L to plus L. यानी कि अगर आपको m निकालना है, then you should know the value of L and it will be minus L to plus L. माइनस एल से प्लस एल तक जो भी वैल्यूज होंगी सारी की सारी क्या होगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इधर आ जाएंगी. एंड you will count these number of values. Just for example, let's suppose the value of L is 1. M will be equal to minus 1, 0, plus 1. यानी कि 3 ऑर्बिटल. You are getting 3 values. ठीक है. इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ते आगे, है ना. Is there anyone who is still writing? Just tell me yes or no. Anyone still writing? Anyone still writing? No, sir. No one is writing. ठीक है. अगर कोई लिख रहा हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल. No one is writing. चलिए अब ध्यान से, ठीक है ना. दोस्त who can turn their mic on जहाँ पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, प्लीज ऑल ऑफ यू टर्न योर माइक ऑन. हम ऑफ करा देंगे अगर कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा होगा ना, देन आई विल आस्क देम टू टर्न इट ऑफ. अब आप लोग को लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक है. वी आर इन शेल नंबर 1, फर्स्ट शेल में है, ठीक है. वी आर इन व्हाट? शेल नंबर 1. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या होगी अगर हम फर्स्ट शेल में? तो बताइए गाइस, टेल मी. जो आंसर आ रहा है दिमाग में क्या होगा? लॉजिकल आंसर. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pqn? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 2, 1 ही होगा ना. शेल नंबर मतलब क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट ऑर्बिट. ऑर्बिट शेल सेम ही चीज होता है ना. तो व्हेन वी आर इन द शेल नंबर 1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? इट विल बी 1. यहां तक सबको क्लियर है? यस वन, प्लीज टेल मी. Yes. Yes, sir. ठीक है. देन वी विल कैलकुलेट द एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि L होता है. L के लिए फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है? 0 to n-1. सही है यहां तक? कैसे? प्लीज टेल मी. प्लीज डोंट राइट इट, अभी सिर्फ सुनिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. डू वी हैव द वैल्यू ऑफ n? टेल मी गाइस, यस और नो. कीप योर माइक ऑन. देखिए माइक ऑफ मत कीजिए. आप लोग जो सोचते हैं कि स्पेस बार दबा के आई कैन सी द आंसर, वो नहीं होगा, ठीक है. तो आई विल आस्क यू गाइस, दोस हु कैन टर्न देयर माइक ऑन, कीप इट ऑन. ऑफ करना ही नहीं. वो माइक वहां से स्पेस बार दबा के प्लीज मत रहिएगा. आप माइक वहां से ऑन कर दीजिए. जो माइक का वहां पे एक होता है ना आइकन, वहां पे क्लिक कीजिए, माइक ऑन हो जाएगा. नॉट टेल मी गाइस, डू वी हैव द वैल्यू ऑफ n? Yes. Yes, sir. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 1. 1 माइनस 1. ठीक है. तो ये क्या हो गया? 0 to 0. तो 0 to 0 तो एक ही वैल्यू आ गई ना, 0. तो AQN की वैल्यू क्या आई? 0. दैट मीन्स कौन सा सबशेल?
जीरो का मतलब कौन सा सबशेल, देखिए बताइए टेबल में। S. वेरी गुड, एस सबशेल। ठीक है, दैट मींस इन द फर्स्ट एस सबशेल हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और हम लोग कर लेते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, -L2 प्लस एल। नाउ -N2 प्लस एल क्या होगा, जीरो में, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, जीरो, -0 प्लस जीरो तो कुछ होता नहीं है, विल गेट ओनली वन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अच्छा, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अरे भाई बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, व्हाट इज द वैल्यू। -L to +L. हाँ, नहीं इस केस में वो तो जनरल हो गया, इस केस में व्हाट इज द वैल्यू, 0. जीरो। ठीक है, वन सेकेंड आई एम आस्किंग। ठीक है, सही कहा आप, एक बार उसको रिपीट कर लीजिएगा बस, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 0. जीरो। नाउ आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी values of magnetic quantum number, अब बताइए आंसर। 0. यस अलीना, जोर से बोलिए, ऐसी धबे धबे आवाज में। यस अलीना, बोलिए। 0. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू और हाउ मेनी वैल्यूज में सवाल में, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ बिग डिफरेंस, राइट। आई एम सेइंग आई हैव वन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दैट वैल्यू इज जीरो, दैट मेक सेंस। वी हैव वन वैल्यू ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हमको एक वैल्यू मिला, वी गॉट वन वैल्यू, राइट, दैट इज जीरो, that value is zero, but how many values did we get, we get one value। ठीक है, अभी आपको शायद उतना समझ में ना आए, ठीक है, वो दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, बट आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है, डोंट वरी, अभी जस्ट नहीं आ जाएगा। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वन वैल्यू, ठीक है, और वन वैल्यू का मतलब होगा वन ऑर्बिट। And there are a few things that I can talk about the shell number one। shell number one में हम क्या कह सकते हैं, in shell number one I have only the s subshell। फर्स्ट शेल में हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ, बोलिए, व्हाट आई विल गेट इन द एस सबशेल, एस सबशेल मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एस सबशेल मिल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन हैव हियर, मैक्स इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल ही है हमारे पास, एंड एस सबशेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन वी फिल, वी कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है गाइस, जैसे नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नाउ इट विल बी मोर क्लियर, यू जस्ट नीड टू कीप आंसरिंग, है ना, डोंट नीड टू राइट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। शेल नंबर टू, in what, shell number 2, what will be the principal quantum number for this shell, second shell का principal Two. quantum number क्या हो जाएगा, 2। very good, now we are going to ask about what, azimuthal quantum number, L। tell me the formula, what is the formula for AQN, 0 to 0 to N -1. n minus 1। what is the value of 2 here, sorry, what is the value of 2, what is the value of n here, n की क्या value हमारे पास अभी, 2. 2, 2 minus 1, this will be equal to 0 to 1। तो 0 से लेके 1 है ना, तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 0 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, मेक सेंस, यस और नो प्लीज टेल मी। Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, दिस 0 दैट मींस व्हिच सबशेल एंड दिस 1 मींस व्हिच सबशेल। 0 का मतलब कौन सा सबशेल, Yes. एस सबशेल। एस सबशेल के लिए हमने सारी चीजें कर दी है, लेकिन फिर से कर लेते हैं, ठीक है। एस सबशेल आ गया आपके पास, इस सबशेल के अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -L2 + L, जिसको हमने क्या लेगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 0 वैल्यू आएगी। दैट मींस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू 1। एक वैल्यू मिली तो एक ऑर्बिटल, ठीक है। अब 1 के लिए बताइए व्हाट सबशेल विल बी देयर, Peace. फॉर 1 जो लोग को, हाँ ठीक है, जो लोगों को भी एस नहीं समझ में आया, थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज आ जाइए, ठीक है, शिफ्ट कर जाइए, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोंट फोकस ऑन एस की 0 1 क्या होगा, पागल मत हो जाइए, ठीक है। डोंट पुल योर हेयर आउट टिल नाउ, डोंट पुल योर हेयर आउट, सुनिए, पी सबशेल, ठीक है। पी सबशेल में बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू -L2, बोलिए गाइस क्या होता है, -L2 2 plus L. प्लस एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर पी, पी के लिए वैल्यू क्या होती है एल की, -1 to +1. हाँ हाँ ठीक है, ये पूरा आंसर बता दिया आपने, -1 2 + 1। तो -1 2 + 1 में क्या क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा,
+1 आएगा। सही है ये सोनू प्लीज? Yes, sir. ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? व्हाट आर द वैल्यूज फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? -1 बोलो, 3, 1, 0, जोर से plus बोलो। and 1. हाँ, स्टार्टिंग से आराम से बोलेंगे ना। व्हाट इज द वैल्यू जैनब? अगेन वन सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू जैनब? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? द आंसर यू आर गिविंग ना जैनब, वो हाउ मेनी का है। ठीक है, सो व्हाट आर द वैल्यूज हियर? अब आपको सब आई थिंक जैनब को समझ में आ गया, बाकी लोग को भी आ जाएगा। व्हाट आर द वैल्यूज? -1, 0 एंड +1। इफ आई आस्क हाउ मेनी वैल्यूज, तो आप क्या आंसर करेंगे? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? टेल मी गाइस। 3. अब आपको समझ में आया ये 1 कैसे है? अलीना, मुनीबा, सबीहा, ऑल ऑफ यू गाइस टेल मी। Yes, sir. Yes. ठीक है ना? सो हाउ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आंसरिंग अबाउट ऑर्बिटल्स। आप हाउ मेनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ दीजिए अपने आप से, एंड आपको आंसर मिल जाएगा कि ऑर्बिटल्स कितने हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए। हियर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं इन द एस सबशेल ऑर्बिट? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 2। पी सबशेल में हमने लिखाया था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6. 6, है ना? अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट द शेल नंबर 2, शेल नंबर 2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? शेल नंबर 2 में आई हैव एस सबशेल जिसमें 2 आते हैं, पी सबशेल जिसमें 6 आते हैं, तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द शेल नंबर 2 विल बी 8। सही है? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है सबको? Yes. ठीक है, इतना लिखना चाहेंगे? राइट इट प्रॉपरली, है ना? राइट इट प्रॉपरली, ऐसे कि आप लोग बाद में जब पढ़े तो आपको समझ में आए। While writing, if you get any doubt, please let me know. Raise your hand once you're done writing.
Zainab, can you please turn your mic on? Yes. Zainab, what subshell do we have in shell number 1? Zero. Subshell, not the end-to-end, the subshell. Yes. कौन सा subshell? S subshell. What is the maximum number of electron that we can have in S subshell? Two. And shell number 1 is still, we have only S subshell. That is why maximum number of electron for shell number 1 will also be 2. Make sense? Yes, I got it. Waiting for Jogata. Okay, you guys, Jogata, Harshit, समझ में आ रहा है आप लोग को ये सुनो? Yes, sir. Harshit, what about you? But try to answer also, huh? You guys are very silent. Okay. Anyone still writing? Please let me know. Anyone still writing? Anyone still writing? Please say yes if you're writing. No can na kare. If nobody says I'm writing, I will scroll down. Anyone still writing? No one is writing. ठीक है. We were still in the magnetic quantum number. ठीक है. तो magnetic quantum numbers के लिए देखिए ये दो चीज आपको हम लिखा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस सबशेल की बात करें, प्लीज राइट दिस थिंग्स विद मी. आप लोग को अब समझ में आ चुका है एस सबशेल. When we talk about S subshell, the value of L will be equal to 0. The value of M will also be equal to what? अभी हम लिख देते हैं minus L2 plus L, है ना? So this will be equal to what? Minus 0, 2 plus 0. तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, right? So I'll write here 0. And then when I talk about orbitals, we'll say we will have one orbital. We will have one orbital. Orbital को represent करने के लिए ऐसे एक box बना दिया जाता है. So how we represent orbital? ठीक है? One orbital ऐसे spherical नहीं है. Represent करने का तरीका है उसकी how many orbitals आते हैं. Similarly, when we talk about the p subshell, I hope you can write this down. यहाँ पे आपको confusion नहीं होगा. अगर होगा तो फिर बता दीजिए. P subshell, the value of L is equal to 1. The value of M will be equal to minus 1. 2 plus 1 according to the formula. And this will be equal to minus 1, comma 0 and plus 1. If I talk about the number of orbitals that we are going to have in this case, it will be equal to the number of values we are getting for magnetic quantum number, that is equal to 3. 1, 2 और 3. 1, 2 and 3. So number of orbitals is also equal to 3, and this is represented as 3 boxes. This is also P subshell, this is also P, and this is also P. This is the first orbital of P, second orbital, and third orbital of P subshell. Similarly, when we move on to the D subshell, the value of L, it is equal to 2. The value of M, it will be equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1, and plus 2. Minus 2 से plus 2 तक सारे values. So the number of orbitals that we are going to get in this case will be equal to 5. And then I will represent the orbital something like this. I hope this ये बन जाए बस. एक orbital, 2 orbital, 3 orbital, 4 orbital, 5 orbital. बहुत बड़ा हो गया. हम छोटा कर देते हैं. 5 orbitals. ठीक है. So this is what we are going to get in the case of D subshell. अगर वहीं हम F subshell की बात करें तो नीचे हम बोलेगा स्पेस. F subshell में क्या होगा? The value of L, it will be equal to 3. The value of magnetic quantum numbers will be starting from minus 3, plus 2, plus 1, 0, plus 1, plus 2, and plus 3. ठीक है. तो वहीं अगर हम number of orbitals की बात करें तो number of orbitals जो होंगे हमारे पास, that will be equal to 3 और 3, 6 और एक 0, 7. Now I can write 7 orbitals. ये हिम्मत नहीं है हमको 7 orbitals बनाने की. So we'll just copy this और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे.
how many more lines? I think 3 more lines we need to form. एक 2 3 4 5 6 7 we have part of a 7 titles for the S subject. Now there are a few things that we can say here in this case. क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा. The value of m, not the number of values, but rather the value of m. The value होगा m का should always be less than or equal to L. L के या तो बराबर हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम L की बात करें 2, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की दैट इज +2. उसकी बात सारी करनी है. It will be either equal to or it should be less than 1. It should be less than the value of L. So M की जो वैल्यू होगा it should be equal to, क्या कर दिया हमने, should be less than or equal to the value of L. ठीक है. आई होप आप अभी लिख रहे होंगे थोड़ा. If anyone has not done till D subshell, then please let me know. I will scroll up. If you're done till the D subshell, then please continue. इसके आगे भी हम लिखते हैं, कुछ ज्यादा यहाँ पे है नहीं. Slowly if you're going to listen to me and then write it. ठीक है. या फिर साथ साथ लिख लें जैसा भी आपका सिचुएशन है अभी, तो इट विल बी फाइन. स्पिन क्वांटम नंबर कुछ पास होता नहीं है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. क्या करते हैं इसमें, प्लीज राइट हियर. अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन तो दो तरीके की है. एक तो ये एक्सप्लेनेशन है दैट दी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और उसी को हम स्पिन बोलते हैं. नाउ द स्पिन और द रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, द मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, वो जो होगा कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. और दूसरा एक्सप्लेनेशन इट इज अप स्पिन एंड डाउन स्पिन. कि इसका मतलब ये होता है दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग, इट इज गोइंग टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. जब भी चार्ज का मोशन होगा, इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड. You must have learned this in the magnetic effects of current. How the current happens. Current is because of the flow of electron. So electron in motion, current से क्या आता है आपके पास, magnetic field. So whenever charge is moving, you will have a magnetic field, and hence it will have a up spin. That means एक उसका magnetic field का direction होगा. और अगर opposite, if it is revolving oppositely, then it will have a magnetic field which is in the opposite direction. तो meaning है बस इसका. आपको क्या याद रखना है वो हम आपको बता देते हैं. You will write here the motion of electron around its own axis is called spin of electron. It's called spin of electron. Now, next one, there are only 2 allowed spin. It does not depend on anything. There are 2 allowed spin values. क्या क्या है? yes, या तो आपके पास प्लस हाफ होगा, which generally इसको हम लोग ये कर देते हैं क्लॉकवाइज से, like we attach it with the clockwise spin or up spin, and we denote it like this with 2-headed arrow or a single-headed arrow. So they चलती हैं यहाँ पे. S is equal to minus half. This will be anti-clockwise, which could be also which is also said to be down spin. इसको हम लोग इस तरह से या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट. If there is anyone who's still writing, please let me know. Anyone still writing? Sir,
I'm writing. Anyone's? Yeah. I'm right. Yes. Zainab, are you writing? Or you are Yes. done? I'm writing, sir. So, so when I ask them, is someone writing? तो मैं कौन करके बताएं? I am writing. Okay. Raising hand generally would mean that you are done. ठीक है? Raising of hand generally means that you are done. Spin quantum अगर में कुछ खास है, या तो हाफ प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, वो तो only these two are allowed values. अगर कोई बोले कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन आ रहा है 5, that is wrong. If somebody say there is an electron whose spin is 1, that is also wrong. If somebody say there is an electron whose spin is minus half, that is correct. There is an electron whose spin is plus half, that is also correct. Other than that, if anyone says that the spin of an electron is some other value than plus half and minus half, that is a wrong information. That will be false. जल्दी से लिखिए, एक दो concluding points लिखाना है, then the class will be over. Alina Flair, do you have the Learnivio app with you? क्या आपके फोन में Learnivio app है? You have not downloaded it yet? How can be that? अच्छा अच्छा, दो हो सकते हैं ना, ये आपको समझ में आ रहा है जैसे इट कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. यस जसलीन, टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. टू वैल्यूज है ना, इतना तो समझ में. स्पिन के दो ही वैल्यू हो सकते हैं. देयर कैन बी ओनली टू वैल्यूज फॉर स्पिन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज पूरा क्लियर विथ यू ना जसलीन. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी स्पिन होने का. सही है? Okay, sir. ओके नहीं, आपको ये समझ में आया कि नहीं? ये बात मान के मत लीजिए आप. Try to think you are spinning something. If you are going to spin something, you can do it clockwise or anti-clockwise. There is no other way around. और कोई तो वे नहीं है उसको स्पिन करने का. That makes sense? Yes or no? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. एक बहुत बढ़िया चीज आया था ना बहुत पहले, फिजेट स्पिनर. तो फिजेट स्पिनर में हाउ यू कैन स्पिन? यू कैन ओनली स्पिन इन टू वेज, या तो आप उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सही है? ये क्लियर है बिल्कुल जसलीन? Yes, sir. तो हमने बोल क्लॉकवाइज को प्लस हाफ से रिप्रेजेंट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ से रिप्रेजेंट. दैट्स इट. मेन थिंग क्या है? देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज. अब दो पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट किस में कर दिया है हमने? क्लॉकवाइज को प्लस हाफ में और एंटी क्लॉकवाइज को वी हैव रिप्रेजेंटेड इट एज, बट माइनस हाफ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज. गॉट दिस नाउ जसलीन? कि माइनस हाफ प्लस हाफ कहां से आया? Yes, sir. Anyone still writing? Anyone still writing? No, sir. नो ना, ठीक है. देखिए, और वापस हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जहां पे आपने इतने सारे दो सबशेल्स के बारे में, दो शेल्स के बारे में लिखा था. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू कंक्लूड सम पॉइंट्स. दीज आर नॉट, ये फॉर्मूला नहीं है, दीज आर ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग को जनरलाइज कर रहे हैं. ठीक है. इफ आई लुक एट द शेल नंबर 1, if I look at the shell number 1, the number of orbitals that I am getting is 1 orbital. ठीक है. Number of electrons that I am getting is 2 electrons. यानी कि थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. यहाँ भी देखिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज व्हाट, हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड शेल में एक और चीज हम लोग को समझ में ये आई मैक्सिमम. अच्छा, शेल नंबर 1 में आपके पास ऑर्बिटल कितने हैं? ऑर्बिटल इट इज इक्वल टू 1 and the number of electron that you can have, it is equal to 2. The shell number 2 maximum number of electron is equal to 8 and the number of orbitals that you are getting is equal to how much? It is equal to 4. एक तो s का orbital and then we have 3 orbitals of p, total makes it 4. From here I will generalize a few things. अब देखिएगा कि ये fit हो रहा है. This is just mathematical manipulation. इसमें कोई formula नहीं लग रहा है. You will write a note here and in the note you will write a few points. Number of orbitals for given shell. If you have been given shell, that means आपको क्या मिला हुआ? n मिला हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो given number of orbitals क्या हो जाएगा? n स्क्वायर. तभी तो देखिए, जब शेल नंबर 1 का स्क्वायर 1,
2 का square 4. So in the shell number 2 we had 4 orbitals, total orbitals. Huh? Similarly, once we have got the number of orbitals, I can also talk about the number of electrons for a given shell. If we have been given a shell number, then can we tell the number of electrons, the total number of electrons that it can have? Yes, because the number of orbitals is n square. One orbital can have 2 electrons. जैसे कि in S subshell we have 1 orbital, it can hold 2 electrons. In P subshell we have 3 orbitals, it can hold 6 electrons. If I have n square orbitals, it can hold 2n square electrons. Next point, number of orbitals for a given subshell. If you have been given subshell, सबशेल का मतलब आपको क्या मिला रहेगा? यू विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर एल. एल की वैल्यू से ही सबशेल पता लगती है. देखिए, एक तो जो प्लस में है वट एवर द नंबर इज, और फिर एक जो माइनस में, वो दोनों नंबर आ जाएंगे और जीरो. मान लीजिए 3 है तो 3 नंबर इधर आ गया, 3 नंबर इधर आ गया और एक जीरो, तो कितना हो जाएगा? 7, है ना. अगर इफ द वैल्यू वाज, द वैल्यू ऑफ एल वाज 2, -2 होता, -2 और इधर +2 होता. तो -2 से 0 तक दो वैल्यूज मिलते, +2 तक यहाँ तक दो वैल्यूज मिलते हैं ना, -2 -1 और +1 एंड 2. तो दो और बीच में एक जीरो. बेसिकली आपको क्या मिल रहा है? 2 टाइम्स वट एवर वैल्यू आर हैविंग +1. दीज आर जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस. इसको आप एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा. ठीक है, चलिए प्लीज राइट थिंग्स डाउन. इसको लिख लीजिए. Okay, in the next class, we are going to go into details of the orbitals. Okay, so the s orbital, the p orbital, the d orbitals, in सबके बारे में लोग डिटेल में समझेंगे, and all of these things are also important. Zainab, can you please turn your mic on? Zainab, I'm starting from, let's suppose the value of L, it is equal to S subshell पे बात कर रहे हैं, S subshell. L is equal to 0, M will be equal to what? 0, because -1 से 0. Plug in the formula, 2 into 0 plus 1 क्या मिलेगा आपको? 2 into 0 will be 0 plus 1 will be 1. ठीक है, S subshell के लिए. उसी तरह से P subshell के लिए आपको पता है, P subshell में we have seen that how many orbitals are there? There are how many orbitals? 3, है ना? अरे 3 है भाई P subshell में. जाना क्या ना, कॉपी में देखिएगा है. P subshell is also there ना, सी. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 2 into what is the value of L if you have the P subshell? जैसे S होता है तो 0 होता है, वैसे P होता है तो क्या होता है? L is equal to how much? 2. जोर से बोलिए, 2. देख के बोलिए. Look in the notebook and tell me what is the value of L when P subshell is there. 6.